Hello, my dear students. We are now starting with a new chapter that is called as Social Responsibilities of a Business Organization. तो बच्चा लोग सबसे पहला तो ये समझते हैं कि what exactly we understand by the term social responsibility. Now we all know that a business cannot perform in isolation. अब इसका मतलब होता है, ऐसा मान के चलो कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपको मुंबई में बिजनेस करना है कि अंटार्कटिका में बिजनेस करना है, तो आप बोलेंगे सर हम लोग तो मुंबई में बिजनेस करेंगे। तो हम अंटार्कटिका में बिजनेस क्यों नहीं करेंगे? अरे वहां पे कस्टमर्स नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स बिजनेस अकेला बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेसमैन विल नॉट बी एबल टू अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन अ लोन प्लेस, एंड दैट्स व्हाई दे नीड अ प्रॉपर सिविलाइजेशन, दे नीड अ प्रॉपर सोसाइटी वेयर दे कैन परफॉर्म। बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत से ग्रुप्स का हेल्प लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में इन्वेस्टर्स होने चाहिए, तब बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा और उसका बिजनेस चालू होगा। देन दिस बिजनेसमैन रिक्वायर्स एम्प्लॉयज। व्हाई? एम्प्लॉयज आर पीपल हु विल बी वर्किंग फॉर देम। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये एम्प्लॉयज ही तो करेंगे। देन दे ऑल्सो रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ कस्टमर्स। दे नीड कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो ये लोग गुड्स किसको बेचेंगे? देन देर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम लाइसेंस, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सच टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स हेल्प्स द बिजनेस टू डू their business. Now अगर ये social groups business को help कर रहे हैं business करने के लिए, तो businessman का भी कुछ responsibility बनता है in return. ये लोगों की वजह से हमारा business है, इसीलिए हमको सिर्फ profit के पीछे नहीं भागना चाहिए, profit के अलावा भी हमको कुछ extra करना चाहिए, and that extra is called as social responsibility. Because the various social groups are helping the businessman to do their business, so in return the businessman also has to do something extra for this society at large, and this something extra is referred to as social responsibility. So my dear students, social responsibility of business organization refers to its obligation. ये उसका परम कर्तव्य है, obligation, to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society. इसका मतलब होता है कि बिजनेसमैन ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा डिसीजंस लेना चाहिए जो सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, सोसाइटी को हेल्प करने वाला होना चाहिए, या सोसाइटी के अलग फैक्टर्स के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। Okay, so that was meaning of the term social responsibility. Now the question arises, why a businessman should undertake social responsibility? So let's see this step by step. Okay, point number one in this is called as the concept of trusteeship. Now we are shifting our focus to the great Mahatma Gandhi. गांधी जी बोलते थे, businessmen are the trustees of the society. Whatever profit they earn do not belong to them entirely. A large part of the profit has to be returned back to the society. A small part can be taken by them for their own living being. इसका मतलब होता है कि ये जो समाज है, इसमें जनरल पब्लिक है और इसमें बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस करके पैसा कमा के रफू चक्कर नहीं होना चाहिए। रफू चक्कर मतलब उनका जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड प्ले अ लार्जर रोल इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी के वजह से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो ये सोसाइटी का जरूरत पूरा करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ऐसे महात्मा गांधी बोलते हैं, किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। सो बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज, दे आर द केयर टेकर्स ऑफ द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटीज, दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ the different sections of the society.
This concept, which is given by Mahatma Gandhi, is called as the concept of trusteeship. So, a businessman has to undertake social responsibility because Mahatma Gandhi says so. Right? Chalo, moving to the next one is called as the changing expectations of the society. अब पुराने ज़माने का जो सोसाइटी था, या ऐसा मान के चलते हैं, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो बिजनेसमैन को देखते थे एज अ गुड्स प्रोवाइडर और अ सर्विस प्रोवाइडर। भाई हमको जो भी गुड्स लगता है वो बिजनेसमैन हमको देगा, हमको जो भी सर्विसेज चाहिए वो बिजनेसमैन हमको देगा। तो यही था एक क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन। बट नाउ इट इज नॉट सो। As I told you, businessman is seen as the trustee of the society. अगर समाज को किसी चीज का जरूरत है तो बिजनेसमैन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। सो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द बिजनेसमैन इज चेंजिंग, रादर आई वुड से इट इज इंक्रीजिंग। नाउ बिजनेसमैन शुड नॉट जस्ट प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। यू विल सी बिग बिजनेसमैन स्टार्टिंग देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आई मीन टू से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने हॉस्पिटल्स शुरू किया है। चलो, अगर आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट समाज के कल्याण के लिए डोनेशंस देना चाहिए, छोटे मोटे चीज करते रहना चाहिए, सो दैट द सोसाइटी विल डेवलप। एंड टुडे पीपल फ्रॉम द सोसाइटी आर एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स फ्रॉम द बिजनेसमैन, एंड दैट्स व्हाई बिजनेसमैन शुड अंडरटेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay guys, moving to the next one is called as reputation. Now what do we understand by reputation? Reputation मतलब we should be known in the general public. हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा कंपनी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फेमस विद इन द सोसाइटी, और उसके लिए ही स्पेंड lakhs and lakhs of rupees on advertisement. And yes, after getting publicity, he becomes famous also. उसका प्रोडक्ट, उसका सर्विसेज भी फेमस हो जाता है। Now, there is a different angle to this. Rather than spending a huge amount just on advertisement, उसका ही एक पार्ट अगर समाज कल्याण में लगा देंगे, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में लगा देंगे, तो वैसे भी उसको फुकट का एडवर्टीजमेंट या फुकट का पब्लिसिटी तो मिलने ही वाला है। So, by undertaking social responsibility, a businessman can easily earn good reputation in the market, in the society, and anyhow, he will be becoming famous. And that's why a businessman should undertake social responsibility. Okay, moving to the next point is called as protection of environment. Now today there is environmental degradation. Pollution हो रहा है, air pollution, water pollution, noise pollution. उसके बाद जब प्रोडक्शन होता है तो जो वाटर कंटामिनेशन होता है वो वाटर ऐसा का ऐसा ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी इज दैट द बिजनेसमैन शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब दे शुड कॉज लेस पोल्यूशन। देखो भाई, अगर आप प्रोडक्शन करोगे पोल्यूशन तो होना ही है, तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि स्टॉप पोल्यूशन, बट एटलीस्ट यू कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो, वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। आपका जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको पहले ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद उसको छोड़ना चाहिए। इससे आपके नदी, समुंदर, ये सब यहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होगा। ओके, नॉइज पोल्यूशन को कम करना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स refers to protection of environment. Then, moving to the next one is called as optimum utilization of resources. Now, what exactly is this optimum utilization of resources? Mother Nature provides us with natural goods, और जिसको हम लोग resources बोलते हैं, लेकिन ये unlimited नहीं है, ये scarce है, and that's why whatever resources we get from nature उसको संभाल के यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी यूज नहीं करना चाहिए। No maximum, no minimum, because if you use maximum वो जल्दी खत्म हो जाएगा, and if you use minimum तो वो waste हो जाएगा। So whatever resources you have, that should be used at the optimum level.
Moving to the next one is called as the pressure of trade unions. Now trade union is nothing but the union of employees. आज एम्प्लॉइज को पता है अपना हक क्या है और एम्प्लॉइज अपने मालिक से मतलब बिजनेसमैन से चाहते हैं कि हमको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिले, जैसे हमको गुड वर्किंग कंडीशंस मिले, हमको हैंडसम सैलरी मिले, उसके बाद हमको सैलरी टाइम पे मिले, देन हमारा जो सजेशन है उसको सुनना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सो टुडे दिस ट्रेड यूनियन इज exerting the pressure on the businessman, and that's why businessmen should undertake some social responsibilities obviously towards the employees. Moving to the next point is called as the growth of consumer movement. अब आजकल के कंज्यूमर्स को पता है अपना राइट क्या है, खास करके आफ्टर द एक्ट दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, अलग अलग वीडियोस बनाए, टीवी पे उसको एयर कर दिया, अनाउंसमेंट किए. सो कस्टमर नोज व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग समथिंग मोर फ्रॉम द बिजनेसमैन. सो नाउ बिजनेसमैन नोज दैट आई कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस माल प्रैक्टिसेस. मुझे अच्छे गुड्स ही सप्लाई करना चाहिए, मुझे राइट प्राइस ही लेना चाहिए. सो दीज आर सम थिंग्स दैट द बिजनेसमैन इज एक्सपेक्टेड टू डू एंड दैट इज नथिंग बट द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. Moving to the eighth point is called as government control. Now government through different acts controls the activities of the businessman. Businessman को पता है कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट का वॉच है. अगर बिजनेसमैन कुछ गलत करेगा तो गवर्नमेंट उसको रोकेगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसको फाइन्स लग सकता है. सो बिजनेसमैन शुड नॉट अंडरटेक एनी टाइप ऑफ सच एक्टिविटी which is illegal. Rather it should go beyond the point and do something extra for the society ताकि गवर्नमेंट के अच्छे बुक्स में इनका नाम आ सके. And that is what is called as the need of social responsibility because the government is watching. Moving to the next one is called as long-term self-interest. Now what exactly is this long-term self-interest? देखो भाई, जो इंसान अच्छा काम करता है समाज में उसका अच्छा नाम होता है. तो इसी तरीके से if a businessman undertakes social responsibility, he will be known as a good businessman in the society. He will be getting पब्लिसिटी इन द सोसाइटी. तो वो जो भी बिजनेस करेगा उसको समाज का या सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा. तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए बिजनेसमैन शुड अंडरटेक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. Okay, moving to the next point is called as complexities of social problems. अब ऐसा है कि बिजनेसमैन के वजह से ही कुछ सोशल प्रॉब्लम्स बन गए हैं. जैसे बिजनेसमैन जब प्रोडक्शन करता है तो पोल्यूशन होता है. Then there is discrimination done by the businessman between different consumers and between different employees. तो ये सब प्रॉब्लम्स को नलीफाई करने के लिए बिजनेसमैन शुड अंडरटेक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ताकि उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं उसको वो खुद ही खत्म कर सके. Then, moving to the 11th point is called as globalization. Now, what is globalization? Globalization means opening the door of the economy. We as Indians can go in other country and do business over there, and others can come in India and do business over here. In globalization, the entire world is treated as one single market. तो ये जो कंसेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऑलरेडी आ चुका है. एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हेन दोस पीपल कम ओवर हियर दे आल्सो अंडरटेक सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हेन द इंडियन काउंटर पार्ट सीज कि फॉरेन बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, सो दे शुड आल्सो अंडरटेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज द रोल ऑफ द मीडिया. आज मीडिया एकदम पावरफुल है. आज मीडिया कोने कोने तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है. आपके सेलफोन में भी आप अलग अलग न्यूज़ देखते हो, चैटिंग के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपको पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है.
So if a businessman undertakes any illegal activity or any activity which is not beneficial for the society, he will come in the bad books of the society. But if the same businessman undertakes some good activities which are beneficial to the society, then of course everyone will know about that businessman. He will be famous, and that will be of course helpful for the business itself. And that's why a businessman should undertake social responsibility. So this is nothing but the 12 points under the need of social responsibility. Okay guys, so let's begin with what are the different types of social responsibility towards different social groups. In this particular question, we will be seeing that what are the social responsibilities of the business towards the owners of the business, towards the investors, towards the workers, customers, government. तो ये जो सब समाज है, I mean to say, ये जो society है, इसके जो अलग-अलग interest groups है. So what this businessman has to do towards them. All these things is combined in this one big question that is called as the social responsibilities of the business towards different interest groups. So the first part in this is the responsibilities towards the owners. Now, who are the owners of the business? You must have learnt in your 11th standard that the shareholders are the owners of the business. So we can say that what are the social responsibilities of the business organization towards the shareholders or towards the owners. So the first point in this is called as reasonable profit. We all know that shareholders are interested in dividend. हर शेयर होल्डर चाहता है कि उसे अच्छा डिविडेंड मिले. So ये डिविडेंड आता कहां से? When the business will earn profit, then and then only we will be able to give dividend. So a businessman should see to it that he does his business with his heart and soul and he earns a good profit. और यही प्रॉफिट में से ये जो अपने इन्वेस्टर्स है या ये जो ओनर्स है उनको अच्छा डिविडेंड मिल सके. सो बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बिजनेस को अगर स्टेबल होना है तो उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और तभी ओनर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा. Okay, moving to the next one is called as exploring different business opportunities. भाई अगर आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाना है देन यू शुड ग्रैब द डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे. जो मार्केट में तुमको अपॉर्चुनिटी दिखता है उसको ग्रैब करना चाहिए. बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर में यही सिखाता है. इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझो. ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो ये थ्रेट्स से बचना चाहिए और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए. So, the businessman should be alert to find new business opportunities, and these business opportunities will help the business to grow. Business का growth हो सकता है. Okay, the third point says optimum use of capital. Now we all know these shareholders contribute capital for the business. तो ये जो भी पैसा business में है वो businessman का नहीं है बट उसके इन्वेस्टर्स का है, उसके शेयर होल्डर्स का है. तो ये जो भी कैपिटल जमा हुआ है उसको अच्छे से यूज करना चाहिए. इट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फॉर पर्सनल यूज. ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज. Now businessman should see to it that whatever resources he has, it should not be wasted. सब रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना चाहिए. When the wastages will go down, it is quite obvious the profitability will rise. So business organization can maximize their profitability by minimizing the wastages of the resources that they have in their business organization. Okay, moving to the next one is called as efficient business. अब efficiency means the relationship between the costs and the returns. Whatever activities you are supposed to do, उसका खर्चा कम करो and whatever output you want to give उसको maximize करो. तो कम से कम input में ज़्यादा से ज़्यादा output देना चाहिए. That is called as efficiency.
So the scarce resources should be utilized at the optimum level. ज़्यादा यूज मत करो, वो खत्म हो जाएगा, और कम यूज मत करो, वो वेस्ट हो जाएगा. So use it at the optimum level. Okay, moving to the next one is called as fair practices on stock exchange. Now, stock exchange is basically a market where the shares are traded. So businessmen should not undertake any unfair trade practices like providing the wrong information, insider trading जैसा ऐसा गलत टेक्निक्स को यूज करके अपने शेयर प्राइस को बढ़ाना, ये सब काम नहीं करना चाहिए. इज्जत में बिजनेस करे, अच्छे से प्रॉफिट कमाए, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिटर्न दे, रेप्यूटेशन कमाए और शेयर का भाव बढ़े. दिस इज द राइट थिंग टू बी डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. सो नो अनफेयर practices should be conducted on stock exchanges. Then, moving to the seventh point is called as expansion and diversification. A business has to grow. If a business is not growing, it is said to be suffering from an organic defect. अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बिजनेस में स्टेबल होना है तो आपको ग्रो होना पड़ेगा, राइट? और ग्रोथ दो फॉर्म में होता है. One is called as expansion and the other one is called as diversification. Expansion means जो भी आपका business activities है, वो activities को बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, मार्केटिंग फैसिलिटीज को बढ़ाओ, अपना जो स्कोप ऑफ बिजनेस है उसको बढ़ाओ, लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल, ऐसे बिजनेस को बढ़ाना इज कॉल्ड एज एक्सपांशन. एंड डाइवर्सिफिकेशन मींस starting a new line of business, keeping the old business intact. So, a businessman should undertake various expansion and diversification programs so that the business can grow and profits can be maximized. Okay, moving to the next point is called as periodic information. The shareholders are the owners of the business, और ओनर को पूरा हक है to get all the information about the business. So the owners of the business should get complete and accurate information about the business activities. For this, the businessman should maintain properly his books of accounts. उसका appropriate auditing होना चाहिए. And all these books of accounts or all this information should be available very easily to the owners of the business, to the shareholders of the business. Then moving to the next one is called as the effective use of owner's fund. अब owners का fund मतलब almost it is capital. तो जो भी capital आपके पास है, जो भी ये shareholder ने आपके पास पैसा दिया है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका business के benefit के लिए use होना चाहिए. भाई पब्लिक का पैसा है, जैसा चाहिए वैसा यूज करो, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. That is called as the effective use of owner's fund. And then the last point is called as creating goodwill. So, creating goodwill means the businessman should undertake such activities that it will increase his image in the society. It will create a good image about the business in the society. जब बिजनेसमैन का अच्छा इमेज बनता है तो उसके बिजनेस ऑपरेशन भी बढ़ते हैं, उसका सेल्स भी बढ़ता है, and that's how his profitability also increases, and then he can give good returns to his investors or to his shareholders. So a businessman should concentrate to create goodwill. So management of the business should develop and maintain good public image of the organization. So with this, we have finished off with various social responsibilities of a business organization towards the shareholders or towards the owners. The next social group is called as investors. What are the social responsibilities of a business organization towards the investors? Now, who are these investors? Investors वो लोग होते हैं जो businessman को लोन देते हैं. They are also referred to as the creditors of the business. अब इसमें आते हैं banks, financial institutions, debenture holders, public depositors. All these people make up the investor group of a company or of a business organization. Now, a business enterprise, what they should do towards these particular investors? The first and the foremost in this one is called as proper conduct of the meeting.
Now, these investors will come together so that they can know what has happened to their money. ये पैसे का बिजनेस ने क्या किया है, ये जानने का उनको पूरा हक होता है. And that's why इनका मीटिंग properly conduct होना चाहिए. A company should call meetings of investors and provide them all the information about the business so that they feel satisfied that yes, our money is being utilized properly. Getting to the second point is called as return on investment. Now, why have these investors invested in our business? So that they can get good returns. उनको appropriate interest मिल सके और वो भी time पे मिल सके. So, it becomes the duty of the business organization to conduct a business in such a way that they earn profit and they provide a fair return to the investments that are done by the investors. और ये जो investor का पैसा है उसको कम risk पे डालना चाहिए. मतलब कम से कम रिस्क लेके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करना चाहिए. Okay, moving to the third point is called as handling of grievances. Now, grievance मतलब problem. Now, there could be many investors who have certain problems, like for example, उनको उनका इंटरेस्ट टाइम पे मिला ही नहीं, या मैच्योरिटी होने के बावजूद भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको वापस नहीं मिला, या उनको मीटिंग का नोटिस मिला ही नहीं. ऐसे उनके कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. सो एज अ बिजनेसमैन यू शुड लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड केयरफुली वॉट एवर आर देयर प्रॉब्लम्स एंड यू शुड सॉल्व इट क्विक and fast. That is called as handling grievances. So, the grievances of the investors should be answered in a satisfactory way. जो भी इन्वेस्टर है वो satisfied होके ही जाना चाहिए कि yes, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. Okay, moving to the next one is called as maintaining the transparency. Maintaining transparency का मतलब होता है कि a businessman should not keep any secrets, okay, with the इन्वेस्टर्स को बिजनेस का इन एंड आउट पता होना चाहिए. बिजनेस एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जो मैं कर रहा हूं वो बुक्स में है, जो बुक्स में है वही मैंने किया है. सो बिजनेस शुड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन हिज ऑपरेशंस विद द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको अंधेरे में रखा है या ऐसा कुछ तो है जो हमको पता नहीं है. ये फीलिंग कभी भी इन्वेस्टर के मन में नहीं आना चाहिए. Then, moving to the next one is called as proper disclosure of information. Now, when we talk about information, this is the information about the business transaction. So, the management of the business should give full information, factual information to the investors. आपसे जो पैसा आया वो कौन से बैंक में रखा है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो गया, फिर वो रिसोर्सेज का हमने क्या किया, फिर वो रिसोर्सेज के ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, फिर वो प्रॉफिट को कहाँ पे रखा है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और फिर आपका जो पैसा आया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है और वो इंटरेस्ट आपको कैसे कैसे दिया गया है. ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को देना चाहिए. And then the last one is called as maintain solvency and prestige. अब solvency का मतलब होता है you should maintain good balance so that you will be able to honor the payment of interest on time. ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इंटरेस्ट टाइम पे जाते हैं. तो अगर आप सॉल्वेंसी मेंटेन करेगा, मतलब अगर आप गुड कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस मेंटेन करेंगे तो ही आप ये इन्वेस्टर्स को टाइम पे इंटरेस्ट दे पाओगे. सो बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, solvency and prestige and goodwill to satisfy the investors. So these were the 6 points under social responsibilities of business organization towards the investors. Moving to the next set of social responsibilities, it is towards the employees. Now, employees are those people who are working in our organization. So, what a business organization should do towards the betterment of the employees. The first point in this is called as job security. Now, a businessman or a business organization should provide job security to the employees. जब आप employees को appoint करते हो तो उनको permanent basis पे appoint करना चाहिए या उनको एक long term के लिए appoint करना चाहिए. So, जब आप ये job security देते हो, then the employees are at complete peace of mind that yes, they will be working for long term in this organization. फिर ये
जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इधर उधर घूमते नहीं है बायोडेटा लेके कि कुछ अच्छा जॉब मिल रहा है क्या, अच्छा जॉब मिल रहा है क्या, नहीं, दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर करंट कंपनी एंड देन दे कैन फोकस टोटली ऑन डूइंग देयर वर्क। और इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही एडवांटेज मिलेगा। सो जॉब सिक्योरिटी मींस इट प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू द एम्प्लॉयज एंड दे कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन। So, employees को job security देना is the responsibility of the business. Moving to the next one is called as fair remuneration. Remuneration is nothing but the return that has been given to the employees for the work that they are doing. तो ये एम्प्लॉयज को अच्छा खासा रिटर्न्स देना चाहिए। मतलब मार्केट में एम्प्लॉय जो काम करता है उसका कितना पैसा होता है उतना ही रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उससे कम रेम्यूनरेशन देने का नहीं। यू शुड नॉट टेक अ अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अपने इंडिया में लेबर का सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो बिजनेसमैन व्हाट दे डू, वो लोग कम पैसे में लोगों को अपॉइंट करते हैं और लोगों को भी काम चाहिए तो बेचारे कम पैसे में काम करते हैं। तो वन शुड नॉट डू दैट। Whatever पोस्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये पोस्ट में जो काम करेगा उसका कितना पैसा होता है और सच में उसको उतना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन ऑन टाइम। जो भी सैलरी है, वेजेस है, उसको टाइम पे देना चाहिए और फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। So the business should pay attractive salary packages. Whatever are the applicable bonus, incentives should be given to the employees. खास करके जो मार्केटिंग और सेल्स वाले होते हैं उनको incentives, commission ये भी देना चाहिए so that you can push them further. That means you can motivate them to perform better in their work. Then the next point is called as health and safety measures. The businessman should provide health measures to their employees. Say for example, if they are working in construction industry, तो उनको proper health gear and safety gear देना चाहिए, जैसे कि helmets देना चाहिए, उनको proper suits देना चाहिए, safety shoes देना चाहिए। जब ये लोग किसी construction site पे काम करते हैं, ओके, हाई राइज टावर्स में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर नेट वगैरह डालना चाहिए ताकि कोई गिरेगा तो वो नेट में अटक जाएगा। ओके, देन प्रॉपर सेफ्टी गियर्स देना चाहिए, वो बेल्ट प्रॉपर देना चाहिए। सो दीज आर रेफर्ड टू एज सेफ्टी मेजर्स। अगर आप हेल्थ मेजर्स का बात करेंगे तो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, उनको कैंटीन फैसिलिटीज देना चाहिए। सो व्हेन यू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स द एम्प्लॉयज आर आल्सो वेरी हैप्पी एंड दे विल आल्सो वर्क विद एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। सो द बिजनेस शुड प्रोवाइड हेल्थ and safety measures to the employees. Canteen facilities, medical facilities, sanitation facilities should be provided. Going to the next point is called as good working conditions. Good working conditions are nothing but employees जहाँ पे काम करते हैं वो एरिया, वो माहौल, वो जगह एकदम अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए का मतलब होता है नंबर वन, वो साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, दूसरा वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। लाइट अच्छा खासा रहेगा तो इंसान का एफिशिएंसी भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। देन वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, देन प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, गुड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म गुड वर्किंग कंडीशंस। सो एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, okay, and then the employees can work better in such conditions. Okay, moving to the next point is called as the recognition of trade union. मैंने अभी भी आपको बोला था trade union is nothing but the workers union. Workers come together and they solve each other's problem. If at all management has created some problem for a worker or due to some management mistake a worker has ended into a problem, then these worker unions will help the worker to get the compensation or get the problem solved. So management should not think कि ये workers union या trade union अपना दुश्मन है. Rather, they should encourage the workers to join a trade union. So it is the responsibility of the business organization to maintain industrial peace. आप आपका काम अच्छे से करो ना, तो वर्कर लोग वैसे भी unnecessary डिमांड करेंगे नहीं. So you should not have any problem if the workers are joining a trade union. If they want to join, let them join. You do the best from your end and you need not worry about the trade union. You should recognize the right of a worker to join the trade unions. Okay, getting to the next one is called as education and training. Now, there are employees working in your organization.
और उनको जॉब एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सो एवरी नाउ एंड देन जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय कैन परफॉर्म बेटर, तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए और उससे बेटर परफॉर्मेंस करवाना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी ऑल्सो अलाउड टू एडुकेट देमसेल्व्स। अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज या एक्स्ट्रा एजुकेशन लेना है तो द मैनेजमेंट शुड एनकरेज देम टू स्टडी एंड गेट एजुकेशन. That is called as education and training. So business organizations should provide education and training facilities to their employees, of course depending upon their nature of job. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स पर्सन है और वो MBA करना चाहता है इन मार्केटिंग, तो दे शुड अलाउ हिम टू डू दैट. इफ ही इज परफॉर्मिंग बेटर तो उसको और अच्छा ट्रेनिंग देके उसको और बेटर बनाना चाहिए. मूविंग टू द 7th पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. Now, management always does the planning aspect. Now, the workers should be also allowed to take part into management because it is the worker who works on the floor, who works in the factory. A worker understands the problem better than the management, at least at the factory level. तो worker का अगर कुछ suggestion आता है तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो सजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट वो सजेशन को सुनना तो चाहिए, उसका फीजिबिलिटी चेक तो करना चाहिए. एंड दैट इज कॉल्ड एज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉयज. सो सजेशन स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग इज टू बी एनकरेज्ड बाय द मैनेजमेंट. तो उनको मैनेजमेंट में पार्ट मिलेगा और एक छोटा सा पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ऑल्सो शेयर्ड विद द एम्प्लॉयज सो दैट दे फील बेटर, दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. मूविंग टू द 8th पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. Now, business should offer adequate opportunities of promotion. Now, when the people are working in your organization, you should supervise them. You should have a proper control on them. वो कैसे काम करते हैं ये आपको नोट करना चाहिए. And when the employees are performing better, जब अच्छे performing employees होते हैं तो उनको proper promotion देना चाहिए, उनके सैलरी में हाइक देना चाहिए. इससे आप लोगों को मोटिवेट करेगा और टैलेंटेड एम्प्लॉयज कौन है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Okay, getting to the next point is called as proper grievance procedures. Now, the employees could also have some problems with the management. जैसे उनका सैलरी टाइम पे नहीं आया या फिर उनको कुछ कमीशन मिलने वाला था, वो कमीशन का पार्ट नहीं मिला. फिर उनके कुछ क्वेरीज होंगे जैसे मेरी छुट्टियां कितने बाकी है. ऐसे सब क्वेरीज अगर होते हैं तो मैनेजमेंट शुड सॉल्व ऑल सच क्वेरीज. सो ऑल क्वेरीज ऑफ द एम्प्लॉयज शुड बी सॉर्टेड क्विकली. They should be answered sufficiently and answered as soon as possible so that they feel satisfied. And then the last one is called as miscellaneous. You should give fair treatment to all the employees. एम्प्लॉयज मतलब ऐसे तुच्छ लोग हैं, ऐसे आप उनके साथ बिहेव नहीं करोगे. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड दैट्स वाई यू शुड गिव देम फेयर ट्रीटमेंट. इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है appropriate rules and regulations that are required to be followed by everyone, not just the employees but by everyone. और उसके बाद अगर कोई स्पेशल टैलेंटेड एम्प्लॉय है, उसने अगर कुछ स्पेशल स्किल बताया है, उसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, देन रिकॉग्नाइज दैट स्पेशल स्किल ऑफ द एम्प्लॉय बाय गिविंग हिम प्रॉपर रिवॉर्ड और बाय गिविंग हिम प्रॉपर अवार्ड. एक छोटा सा एप्रिसिएशन का भी प्रोग्राम अगर आप करो तो भी वो एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा. So, my dear students, these were the 10 different points under the social responsibilities of business organization towards the employees. Moving to the next social group is called as consumers. Now, consumers are those people who buy the goods and services from a particular organization. तो ये जो लोग हैं consumers, उसके लिए businessman क्या कर सकता है? The first point in this says good quality of goods. Whatever goods and services are created by the business or by the manufacturer should be of good quality. Substandard goods, low quality goods नहीं बनाना चाहिए. Dangerous goods नहीं बनाने चाहिए. Okay, so business organization should have its quality control department. मतलब जब प्रोडक्शन होता है तो quality control randomly एक सैंपल चेक करेगा और वो सैंपल अगर अच्छा हुआ तो we can be rest assured that वो बैच अच्छा है. So we will have a check that whether the standard of the goods, yeah, the quality of the goods is maintained or not.
inferior quality goods, substandard quality goods should be rejected at the right point of time, ताकि कस्टमर के पास जो गुड्स पहुंचे वो अच्छे क्वालिटी के हो, वो बेटर क्वालिटी के हो. Okay, moving to the next one is called as fair prices. Now, price is a very sensitive term for a consumer. So, whatever charges you are taking from the consumer, in other words, whatever price you are charging to the consumer, that should not be unnecessarily high. You should always charge a fair price. So, consumers should not be cheated by charging high prices. ओके, एमआरपी से ज्यादा तो आप लेना ही नहीं चाहिए, रादर गवर्नमेंट आपको लेना भी नहीं देगा. ओके, बट एनीवेज यू कैन आल्सो चार्ज लेस देन द एमआरपी. So only MRP is to be charged and not more. In many cases you can also charge less than the MRP. Moving to the third point is called as consumer safety. Unsafe products should not be marketed. Okay, those products which are dangerous for human life, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए. Okay, moving to the next point is called as honest advertising. Now, advertising is nothing but attracting the consumers. तो आप जब advertisement करो तो आपका advertisement should be honest. मतलब ये advertisement के through आप सही information, सही facts and figures about the product should be given to the consumers. ओके, मतलब प्रोडक्ट के जो एडवांटेजेस है, सही एडवांटेजेस है वो बताना चाहिए. अगर कुछ साइड इफेक्ट्स है तो वो भी बताना चाहिए. एडवर्टीजमेंट्स शुड नेवर एवर बी मिसलीडिंग. कोई भी एकदम आउट ऑफ द वे फैंसी एडवर्टीजमेंट करके अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. योर एडवर्टीजमेंट शुड बी फेयर, इट शुड बी ऑनेस्ट. जो प्रोडक्ट है वही बताना चाहिए. स्प्राइट बुझाए ओनली प्यास, बाकी ऑल बकवास. सिंपल एंड सीधा. कोल्ड ड्रिंक क्यों होता है? प्यास बुझाने के लिए. दैट्स इट. ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल्स सर्विसेज. ऐसे कुछ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आफ्टर सेल्स सर्विस का जरूरत पड़ता ही है. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसमें इतने बटन्स होते हैं कि क्या करने का समझ में नहीं आता है. सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस कंपनी का आदमी आके, स्टोर्स का आदमी आके हमको डेमो देता है. एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आके वो अपने को समझाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल्स सर्विसेज. सो द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस सो दैट वी कैन एबल टू यूज द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली. कभी कभी प्रोडक्ट का मेंटेनेंस के लिए भी अपने को आफ्टर सेल्स सर्विस लगता है. तो ड्यूरिंग द वारंटी आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए. एंड इवन आफ्टर वारंटी आपको आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज. Okay, getting to the next point is called as research and development. Now, all consumers want best of the products. So, as a business organization, you should undertake research and development ताकि आप आपके प्रोडक्ट को improve कर सको, आप आपके प्रोडक्ट में नए फीचर्स को ऐड कर सको. And आपका product should be used for the betterment of the life of the consumers. So for that, research and development should be conducted by the business organization to improve the quality of the goods. Okay guys, moving to the next one is called as regular supply. Now there are some goods which are regularly used by the consumers. अब रोज सुबह हम लोग उठते हैं तो हमको चाय चाहिए. ओके, रोज हमको सब्जी चाहिए, सब्जी में आलू प्याज ये तो लगता ही रहता है. सो देर आर सम गुड्स विच आर कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स. इसका रेगुलर सप्लाई करना चाहिए. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, होर्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, होर्डिंग ऑफ गुड्स, ये सब बिजनेसमैन नहीं करना चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस माल प्रैक्टिसेस. So, artificial shortage of the goods by hoarding of the goods should not be created. जैसे गुड्स आते हैं आपके पास वैसे आपको कंज्यूमर्स के पास लेके जाना चाहिए. मार्केट में प्रोडक्ट्स या गुड्स अवेलेबल करवाना चाहिए. Okay, moving to the next one is called as attending the complaints. Now, if at all a consumer has got some complaint, okay, तो वो कंप्लेंट वैलिड है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट पहला वो कंप्लेंट क्या है उसको अच्छी तरीके से सुन तो लो, समझ तो लो. अगर वो कंप्लेंट वैलिड है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और अगर वो कंप्लेंट वैलिड ही नहीं है तो कंज्यूमर को समझाना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग.
you should convince the consumer. You should never go against the consumers. That is called as attend the complaints. The business organization must attend complaints of the consumers immediately. Moving to the second last point is called as training. Now the business organization should conduct training of the different products that they are selling to their consumers. In short, they should be conducting the demonstration of their products which they are selling to their consumers. So the consumer is in a better position to use the product, and that too effectively. And then the last point is called as avoid consumer exploitation. अब अलग अलग बिजनेस माल प्रैक्टिसेस होते हैं जिससे बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे अडल्टरेशन ऑफ फूड, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. ऐसे सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए. So these were something called as the 10 points under the social responsibilities of a business organization towards the consumers. The next social group that we are discussing is called as the government. Now government is a very important social group because it is the government who drafts all the rules and regulations which a businessman should follow. So, what are the different social responsibilities of a business enterprise towards the government? The first point is timely payment of taxes. अब गवर्नमेंट को रूल करने के लिए पैसा लगता है. अब ये पैसा तो गवर्नमेंट खुद कमाने जाता नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से? So it comes from these businessmen. A businessman is supposed to pay his taxes on time. जितना भी उसका टैक्स होता है उसको गवर्नमेंट को इज्जत में देना चाहिए. ओके, नाउ द टैक्सेस कुड बी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स. अभी जो नया टैक्स आया जिसको हम लोग बोलते हैं GST, इसको अप्रोप्रिएटली और टाइम पे गवर्नमेंट को देना चाहिए. Moving to next point is called as observing the rules and regulations. Now, the government drafts n number of rules and regulations through the laws. बहुत सारे laws का drafting होता है and laws enforce होते हैं. So, as a businessman, we should be following the law. In short, we should be following the rules and regulations given in the law. So, business organization should follow laws to which they are subjected. Like for example, a joint stock company is supposed to follow the Companies Act of 2013 and the partnerships are supposed to follow the Indian Partnership Regulation Act of 1912. Okay guys, we are now moving to the next one, and that is called as earning the foreign exchange. Now we all know that exports कितना हमारे लिए जरूरी है. तो businessmen should see to it that they reduce their imports and improve their exports. इसको हम लोग बोलते हैं import substitution and export promotion. इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा से ज़्यादा foreign currency इंडिया में आएगा and the balance of payment method will be favorable for our government. So, the business operations and business organizations are expected to earn more and more foreign exchange by exporting the goods. On the other hand, it should also reduce the imports ताकि अपना currency बाहर ना जाए या कम जाए. Okay, moving to the next one is called as economic development. Now, economic development is very important for the country, and this economic development is conducted by the government. By taking proper measures, the government enforces or government boosts the economic development. So the government sets targets for balanced and rapid economic development of a country, और इसके लिए उसको businessman का support मिलना चाहिए. Okay, moving to the next one is called as implementing the socio-economic policies. Now, socio-economic policies are those policies which will be beneficial for the society, और ये सब policies को draft करता है government. So, government expects cooperation and help from different business sectors so that such type of policies could be implemented. Okay, moving to the next one is called as suggestions to the government.
Of course, it is the government who enforces the law. लेकिन लॉ कैसे होना चाहिए, वो लॉ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम आएगा, इसके अगर आपके पास कुछ सजेशंस है एज अ बिजनेसमैन, देन सच टाइप ऑफ सजेशंस शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट. सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड right suggestions to the government so that the government can draft the right policies. Okay, moving to the seventh point is called as no favors. अब no favors का मतलब होता है यहाँ पे the businessman should not bribe the government officers so that the government will act in the way they like. So such type of anti-social activities should not be conducted by the businessman. And last but not the least is called as contributing to the government treasury. At the time of emergency, at the time of war, at the time of natural calamity, the government is expected to handle the situation well. जो भी लोग affect होते हैं, उनको संभालना चाहिए, उनको support देना चाहिए. ऐसे टाइम में गवर्नमेंट के पास पैसा होना बहुत जरूरी है. So the businessman should give donations to the government so that the government can carry out the relief work in the best possible manner. So during the emergencies and natural calamities, the business organizations are expected to help the government to contribute to the funds of the government. So these were the 8 points under the social responsibilities of business organization towards the government. Okay, the next social group is the community, the general society or the public. इसी को हम लोग public in general बोलते हैं. So what are the social responsibilities of the business organization towards the public in general? तो सबसे पहला, very simple, protection of environment. The businessman should protect the environment. That means it should not cause any type of pollution. और अगर pollution होता भी है तो ये pollution को आपको कम करना चाहिए. So reduce air pollution, water pollution, noise pollution. If you are into a productive activity और अगर आप water contamination करते हो तो you should first treat the water and then only let go the water in rivers or into the sea. In this way you will be reducing the water pollution. Moving to the next one is called as better and optimum utilization of resources. So whatever resources you have which is given by nature, they are scarce in nature. इसका बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा और अगर बहुत कम यूज़ हुआ तो ये वेस्ट होना चाहिए. So there should be a optimum utilization of business resources. Moving to the next one is called as reservation for the weaker section of the society. अब जो class या जो set of people is economically weaker या weaker section of the society का होता है तो उसके लिए कुछ reservations करना चाहिए in the jobs. Okay? तो suppose for example you are providing 20 positions तो उसमें का एक 10%, 20% should be reserved for the weaker section of the society. So business organizations are expected to reserve a certain percentage of their positions, of their jobs for economically weaker section of the society. Then development of such weaker section. Now whenever a business is started, that should be started in the backward areas. ऐसा क्यों? क्योंकि backward areas में लोग ज़्यादा develop होते नहीं हैं. अगर वहाँ पे अगर आप business चालू करते हो तो वहाँ के लोगों को job मिलेगा, वहाँ के लोगों का development होगा. जब वहाँ पे business जाता है तो infrastructure develop होता है. And in this particular way, that weaker section of the community or of the public will be developed. So business organizations are expected to generate employment opportunities in the backward areas by starting new business ventures or new business enterprises over there. Then moving to the next one is called as protest against anti-social activities. Now there are many anti-social activities which businessmen conduct. तो उसको तो पहली बात करना ही नहीं चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल स्मगलिंग, देन यूज ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स. All these are anti-social activities. So the business organization should not participate in any such anti-social activities.
Okay guys, moving to the next one is called as financial assistance. Now, the business organizations should provide donations for the social cause. जैसे फॉर एग्जाम्पल एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, देन रिमूवल ऑफ चाइल्ड लेबर, देन गर्ल लिटरेसी प्रोग्राम्स. तो ऐसे जो कुछ सोसाइटी को डेवलप करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बिजनेसमैन प्रमोट करना चाहिए या उनके लिए डोनेशंस देना चाहिए. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड डोनेशंस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सच टाइप ऑफ सोशल कॉजेस. Then, moving to the seventh point is called as prevent congestions. अब congestion का मतलब होता है गर्दी. नॉर्मली ऐसा होता है जहां पे बिजनेस आता है वहां पे डेवलपमेंट होता है और बाकी बिजनेस भी उधर ही आते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है. सो बिजनेसमैन शुड नॉट डू दैट. दे शुड स्कैटर देयर बिजनेस टू डिफरेंट प्लेसेस. दे शुड स्टार्ट देयर बिजनेस एट डिफरेंट लोकेशन. इससे क्या होगा, एक ही जगह पे सब बिजनेसेस नहीं आएंगे एंड द पोल्यूशन लेवल इंक्रीज नहीं होगा. सो बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज बाय स्प्रेडिंग इट्स बिजनेस टू डिफरेंट लोकेशंस. And the last one is called as employment generation. Businessmen, at least of India, should start that business which are labor intensive. Labor intensive का मतलब होता है ऐसा business जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लगेंगे. That means such type of business organizations will be able to enhance the employment opportunities that they are providing to the public. So businesses are expected to provide more and more employment opportunities to different sections of the society. So with this guys, we have finished off with the social responsibilities towards the public at general. And with this, we have also finished off with the various social responsibilities towards different types of sections of the society. Moving to the next topic is called as corporate social responsibility. Now let's try to understand what exactly is this corporate social responsibility. Now, according to the government, मतलब government बोलता है कि business organizations should have a separate department and this department should look after the social responsibilities that are conducted by the big companies. तो बड़े बड़े कंपनीज को बोला गया है कि आपके पास एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका नाम होगा CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आप लोग खुद होके कुछ समाज के लिए करना चाहिए, सोसाइटी के लिए करना चाहिए. एंड दैट मीन्स यू शुड बी कंपल्सरीली टेकिंग अप सर्टन सोशल एक्टिविटीज. उसको हम लोग बोलते हैं CSR. So, corporate social responsibility is a self-regulating business model that aims to contribute to the social goals or support volunteering or ethically oriented practices. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कंपनीज को कि आप खुद होके कुछ ऐसे एक्टिविटीज उठाओ जिससे सोसाइटी को फायदा होगा, जिससे सोसाइटी के कुछ गोल्स अचीव हो और आप ये खुद होके करो. दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट वॉलंटरिंग. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन ये किसको करना चाहिए? नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ, that is the Companies Act of 2013, all those companies jinka assets, that is the net worth is more than 1500 crores, उनको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए. और those companies whose sales or turnover is 1000 crore or more, then such type of companies should undertake corporate social responsibility. And the last thing is all those companies whose net profit is 15 crores or more, they are all termed as big companies. Okay, so they should undertake corporate social responsibility. So what happens in corporate social responsibility is the company or the business organization is supposed to form a CSR committee, that is a corporate social responsibility committee or a department. ये आप कभी भी आपके फाइनेंशियल ईयर में इसको फॉर्म करो और ये कमेटी में कम से कम 4 डायरेक्टर लोग होना चाहिए और ये लोग अपने एक्टिविटीज को रिव्यू करने के लिए साल में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए. So in this particular way, the government has given directions to the companies through the law that they should be undertaking
social responsibilities. So with this, guys, we have finished off with our chapter called as Social Responsibilities of Business Organization.